Good evening, friends. Welcome to Murali sir classes. After a long time, I had a little problem of a personal thing, so I could not able to do almost a month before I had done a last class, and so we'll be starting this class after a long days. So we are doing about spoken English classes. How do we speak English fluently in a short period of time, and without any disturbances, without any fear? How could we speak English? I hope you are all doing well, and I really having a hope that you will be doing something. Day-to-day practices you are doing, and how to speak English, and how to manage everyday English in a simple way, which I taught you in the last 6 वीडियोस. तो 6 वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया हूँ. उसको मैं होप कर रहा हूँ कि दैट आपने अब तक उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, कर रहे होंगे, कि जिसकी वजह से आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख गए होंगे. तो आज हमने इस क्लास को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल स्टार्ट इट आउट, because we have already wasted a lot of time right now, and thank you for your support in the last 6 videos. And this video we will be starting with the grammar classes. थी बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि दैट वी हैव टू स्टार्ट ग्रामर सून सर, बिकॉज यस इट इज़ ट्रू. Why we want to start a grammar soon? Because there is a small problem that there is a in a village things when we start it. First, before speaking, in a way we call it as before speaking we started to write something. That's a practical thing actually, कि we write something, then we will started to say. It's become a habit. Yeah, actually कुछ जगह पे ऐसे आदत हो गया है कि दैट पहले हम लिखना सीखेंगे, उसके बाद बोलना सीखेंगे. एक्चुअली इट्स रॉन्ग प्रोसेस. अंडरस्टैंड कि बस द वे यू स्पोकन इंग्लिश का मतलब यह है कि दैट ऐसे नहीं कि आपने एक्सपर्ट बन जाना है. यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग जस्ट लाइक दैट. द वे यू आर एक्सप्रेसिंग, द मेन थिंग इज आप क्या समझ के बैठे हैं कि दैट स्पोकन इंग्लिश एक बड़ा चीज़ है, कि दैट आपने पहले ग्रामर को सीखना है, पहले ये सीखना है. ऐसे बिल्कुल नहीं है. एक्चुअली यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग वॉट एवर द वे यू नो. आप जो भी भाषा जानते हैं, जैसे भी वर्ड आप इंग्लिश जानते हैं, उसको बस आपको एक्सप्रेस करना है. हर रोज़ आपके दोस्त के साथ, एक अच्छे दोस्त के साथ आप उसको एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए. कोई अच्छे दोस्त नहीं है तो आपका दुनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त वो है मिरर. अंडरस्टैंड? तो यू स्टे इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्टेड टू स्पीक योरसेल्फ. यू आस्क क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड यू विल आंसर योरसेल्फ, एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ डाउट्स. जब आपको डाउट्स होता है तो देन यू कैन contact me, or you can message me, or you can give me a feedback, and you have some this doubts sir, so मेरे को कैसे handle करूँ and other things, so that I can definitely help you out according to your problem. आपको जिस तरह का प्रॉब्लम है उस तरह मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ. and then and there itself, no, जैसे. लेकिन कुछ बच्चे मेरे को मैसेज दिए थे कि दैट दे वांटेड टू स्टार्ट अ ग्रामर क्लासेस, बिकॉज once we'll come to know how to write a sentence, we can able to speak easily. ये उनका intention actually कि that, as I told you, that is not only a process. Yes, that is also a process, but that is not only a process. It's a long process. See, once you completing a grammar, it takes a lot of time. Understand? It's like a lot of time. Understand? Once you completed that grammar, then you can able to speak fluently. That is also a process, but the best process you can see, you can speak, that is you started to speak right now and right today itself. Whatever the words it may be a wrong, it may be a right, you don't worry about it. You started to speak in front of mirror, you can talk to yourself and other things, right? As I already discussed with you, that's how. See, we'll directly go with the grammar classes, and this is especially for the high school grammar, and the high school exams is going to start. 10th standard exams is also going to start from March, maybe the first week or second week of the March, and especially will helpful for them to understand grammar, because grammar English is such a confusional way which we need to understand very commonly, very easily. How can we go with it? Like, see, in the 10th standard, what I have seen and I observed it in especially CBSE and local languages, local books, what will happen? There is a small confusion they have put in directly, because they have started the grammar with the passive voice, active voice, and direct speech, indirect speech. Maximum students, they even did not understand what the basic of grammar. So that's actually there's a problem. And since we are an ancient
problem with Indian culture is that we don't know a fundamental thing. So we are going with higher. हमेशा हम क्या करते हैं कि ऊपर का प्रॉब्लम सोचते रहते हैं. एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है? वी आर इन द डाउन स्टेयर, नो, नीचे प्रॉब्लम है एक्चुअली. वी आर ऑलवेज लुकिंग अप. ऊपर का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है एक्चुअली, कि हमको नीचे एक्चुअली प्रॉब्लम है. उसको हमको स्ट्रक्चर जो कहते हैं उसको सॉल्व करने से हमको ऊपर का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने बता रहा था, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्टली आप चले जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द डायरेक्टली गो टू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अपने डायरेक्टली चले जाएंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा. सो यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक. इन दैट केस आई एम स्टार्टिंग दिस बेसिक ग्रामर classes for the high school classes, and this will be very much helpful for them to attend an exam for the grammar purpose. So we will be starting the first class, like we will be start with the, I told you, it's a basic thing I'm starting, that's with subject, predicate. See, as I told you, my dear, when my class is going on, so many times what you're supposed to do, you have to keep a pen and paper with you and you have to note down some things. And as I told you that a grammar is not at all possible without examples. Understand? Nobody in the world they can explain you grammar without examples. I can give you thousands of examples to understand you, and along with that, what you are supposed to do, you have to sit at home and you have to prepare your own examples. Do not copy this example to you. You write it down, understand, not a problem, because it will be a copy for you to do, make a note kind of a thing, and you can compare your examples with this, and still you get a problem, you can contact me in this case. So there are thousands of examples we will be understanding by subject and predicate. Every sentence, what is grammar? Grammar is the most important part to understand any language. जो भी भाषा आपको समझना चाहिए, तो उस भाषा का ग्रामर समझना सबसे ज़रूरी है. तो इसमें एक क्लिक की सिचुएशन है कि मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ इसमें कि एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है. बहुत सारा वीडियोस आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे बताए गए होंगे कि दैट स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है आपको ग्रामर सीखना है, देन सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, एंड देन वी हैव टू डिबेट क्लासेस है, बहुत सारा ऐसे प्रोसेस है. तो उसके बाद आपने स्पोकन इंग्लिश सीख पाएंगे. एक्चुअली दैट्स नॉट द वन. एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, आई मीन स्पोकन इंग्लिश मीन्स स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर. Speak English without grammar. That's what a spoken English. जैसे हमने मातृभाषा बोलते हैं कि जैसे you can take an example. अमेरिका में जो even everybody knows, even the driver, वहाँ पे टॉयलेट सफा करने वाला साहब जो करते हैं, वो भी आपको इंग्लिश में बात करने वाला मिल सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि that he cannot speak English. He will speak better English, but the thing is he don't know about all this grammar and others. He can speak English. Spoken English का मतलब आप मैनेज कर पा रहे हो इंग्लिश किसी और से बात करने की. ग्रामर क्या हेल्प करेगा आपको? So it can give you boost, it can give you confidence, it can give you a very much confidence that I know how to speak with confidently with someone else without any mistake. किसी मिस्टेक से मैं कैसे किसी से आराम से बात कर सकता हूँ, आराम से कैसे किसी से हैंडल कर सकता हूँ, डील कर सकता हूँ. That the confidence the grammar will give you. So to understand this grammar, we need to understand a sentence first. So what is sentence? Sentence, we all knows that sentence is a group of words which makes a complete meaning. A sentence of a group of words, कुछ words का ग्रुप होना चाहिए, एंड वो पूरा ग्रुप के साथ आपको मीनिंग देने वाला वर्ड होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ सेंटेंस. तो वी कैन नॉट जस्ट से दैट दिस इज was. This cannot be sentence. This cannot be sentence because why I'm saying this cannot be sentence. There is a group of words 1, 2, 3, 4. There is a words and there is a group of words, but it is not giving a complete sense. It's not giving a complete sense. So then we cannot call this as a sentence. What is sentence then? The sentence means it's a group of words which makes a complete sense. पूरा सेंस देना चाहिए, सब मिलके कुछ इंपॉर्टेंट सेंस देना चाहिए, उसको हमने सब सेंटेंस बोल के मान सकते हैं. एवरी सेंटेंस हैव गॉट टू इंपॉर्टेंट parts. One part as a subject, another part as a predicate. Today we will learn about subject and predicate. I'll give you some examples also to you, and you will do it the same way at home. Yes, as I told you, what is a sentence? Sentence have two important parts. That's a subject as well as a predicate, right? So what is subject? That comes first. Like, what is subject? Subject is a part
is a part. Tell something, name of a person, place, or thing that can be well known. Okay, so this is the definition of subject. We can say name of a person, place or thing that we are talking about, and that can be well known. Everybody should understand, everybody can accept that that is a thing, that is a person, that is a place. That is called a subject. Very simple way. What is predicate? Predicate is talking about predicate is a part tell something about the subject. Yes, predicate is a part tell something about the subject. सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलते रहते हैं तो उसको हमने प्रेडिकेट बोल के मान सकते हैं. बहुत सारा बच्चों को इसी जगह पे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है. व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. एक्चुअली एवरी सेंटेंस हैव गॉट दीज टू इंपॉर्टेंट points. Understand? There are some rules. I'll tell you in the further classes. So what will happen? Without this two, you cannot make a sentence. Every sentence, even assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, every sentence, it's compound sentence, complex sentence, simple sentence. Every sentence have got these two things. One as a subject, another as a predicate. Understand? So now we came to know that what is subject and what is predicate. A definition हमने जान लिया. सी मैं हमेशा कहता हूं कि दैट प्लीज डू नॉट रिमेंबर एनी एग्जाम्पल्स. Please do not remember because we don't want any kind of examples with us. Understand? So we will prepare our own examples. Once we need to understand what is the definition of the thing. Once you understand what is definition of the thing, then we can prepare our own example. That will not be a problem at all. See? That's how. See? We will go with an example. We will prepare our own examples now. Right? Like the boy stood on the burning deck. See, first question from today onwards, whatever the way you are reading or writing in English, whatever your way you're doing it, first thing is you have to confirm, is it a sentence? First thing you should get it in your mind before going to the grammar. Is it a sentence? If it is a proper sentence, then only you will find out noun, you will find out subject, a predicate, an adverb, noun, whatever the way you wanted to search in that, a tense and passive voice, active voice, direct speech, indirect speech, tenses, all the things will come only one the sentence is correct. Understand? Without, if the sentence is not correct, you cannot go with the further at all. So basic thing is sentence. If this is a proper sentence, then we can go to the second step, which I will call it as subject and predicate. Is it a sentence? Yes, my dear, this is a sentence actually. The boy stood on the burning deck. यहाँ पे हमको दो चीज समझना जरूरी है, that there is a group of words and which is giving a complete meaning also. एक लड़का है, खड़ा हुआ है. कहाँ पे खड़ा हुआ है? बर्निंग, रास्ते में खड़ा हुआ है, जलता हुआ रास्ते में खड़ा हुआ है. So what is subject? We will call the boy, and what is predicate? We will call the rest of the sentence. We call it as predicate. Since we know that every sentence have got two important parts, so one part we call it as a subject, another part we call it as predicate. Understand? So you will see how we know that the subject is name of a person, place or thing. See, this is the name of a person, so that we will identify this is the subject, and the sentence is also talking about the boy. So what is predicate? Predicate is talking about the subject. Predicate is tell something about the subject. ये देखो यहाँ पे predicate कुछ कह रहा है subject के बारे में. क्या कह रहा है यहाँ पे? Stood on the burning deck. जलता हुआ रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ है. कौन खड़ा हुआ है?
the boy. It means subject. So predicate means talking about the subject. Sir, which is important here, subject or predicate? Both are important. Without predicate you cannot prepare a sentence, without subject also you cannot prepare a sentence. Yes, there is some sentences, I'll teach you in the further classes, there is some sentences you can hide the subject. You cannot prepare without the subject sentence, but you can hide. We will understand the sentence in some cases in assertive sentences. I'll explain you in the later classes. Okay. So we'll have another example I'll give you. Islamabad is the capital of Pakistan. You see, this is the another sentence. We will be having an example. As I told you that without example you cannot learn grammar at all, right? Islamabad is the capital of Pakistan. This is the perfect sentence because we are getting some meaning through this one. Islamabad capital है किसका? पाकिस्तान का. ये message हमको मिल रहा है. So here is a challenge. What is the challenge here? Islamabad is the capital of Pakistan. यहाँ पे there are two different places. What is the subject? I told you name of a person or name of the place. So here the example says about name of the place. There are two different places. Islamabad is also a place and the Pakistan is also a place. Which one we will say? Yes, normally we will go with Pakistan, but it's wrong because Islamabad will be subject. I'll tell you why. Because here in this sentence we are not talking about Pakistan. We are talking about a capital. Which is the capital? That is Islamabad. यहाँ पे जब हम question बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बनाते थे, who stood on the burning deck? Burning deck के ऊपर कौन खड़ा था? The subject. And in the sentence is also talking about capital. It means Islamabad. पाकिस्तान का राजधानी कौन सी है? That is Islamabad बोल के यहाँ पे कह रहा है. So the subject. We'll have another example. On the top of the hills lives a hermit. You see? Another example we will consider. On the top of the hills lives a hermit. Top के ऊपर, पहाड़ के ऊपर एक hermit रहता है, साधु रहता है. This is what? Another sentence. We will understand some meaning out of this. So, this is the perfect sentence. As I told you that the first part, whatever the grammar you will choose it, the first part you have to take it as subject. Predicate के पहले आपको क्या करना चाहिए कि sentence ठीक है क्या, वो आपको जानना जरूरी है. Yes, this is the perfect sentence. कैसे पता चल रहा है हमको कि that we are getting some good meaning out of this. So in this case, what is the subject? There is a confusion. See, hill भी है, okay, hermit भी है. So यहाँ पे हमने verb किसको कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? hermit के बारे में. कहाँ पे रह रहा है बोल के, नहीं कौन रह रहा है बोल के कह रहा है. So in that case, this is a subject and this is a predicate. Left out is predicate. So subject will become a name of a person and उस name of a person के बारे में जो कह रहा है उसको हमने predicate बोल के यहाँ पे मान लिया. तो यहाँ पे आपको क्या समझना जरूरी था कि see, in these two cases subject came first and in this case predicate came first. इसका मतलब क्या हुआ? That the subject will not always comes first. Will not always comes first. Yes, a maximum time it comes first. There is no confusion in that, but it not always comes first. Understand? So it can come after the predicate. Predicate के बाद भी वो आ सकता है, right? And another important point. Thank you. See, thank you. ये एक सेंटेंस है. Yes, ये है परफेक्ट सेंटेंस. हमने किसी को कह रहा है तो हमने नॉर्मल एक सेंटेंस जो है ये थैंक यू बोल के कह देते हैं. बट नाउअडेज हमने क्या कहते हैं? ओनली क्या कह के छोड़ देते हैं? थैंक्स कह के छोड़ देते हैं. नो, व्हेन वी मैसेज समवन एंड वी विल से समथिंग, या एक्चुअली राइट वर्ड्स थैंक यू वेरी मच या थैंक यू, बट वी डोंट यूज द वर्ड थैंक यू. मैक्सिमम टाइम वी यूज थैंक्स. इज इट अ सेंटेंस? यस, इट इज ऑल्सो ए परफेक्ट सेंटेंस, है ना? थैंक यू. यू विल बी हिडन. You will be hidden and it has been understood. इसको लिखने का कोई जरूरत
नहीं होता है। सो ये जो हिडन है इसको हम सब्जेक्ट मान के चल सकते हैं एंड इसको हमने प्रेडिकेट मान के चल सकते हैं, देन इट इज अ परफेक्ट सेंटेंस। सर यू के बिना नहीं हुआ, हाँ यू के बिना हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, विदाउट यू इट इज डन, बट actually what is the definition of thanks? You are saying something to somebody, that there is somebody, that somebody is subject, as I told you कि subject का मतलब क्या होता है, name of the person, so you are saying somebody to a धन्यवाद, धन्यवाद जना रहे हो कि that जता रहे हो, इसे saying thanks to him है ना, so that him जो है person जो है वो subject है जो left out है, understand है ना, you have these kind of examples and you can have a many different kind of examples. इसका मतलब क्या हो गया, we will understand three important point in a subject and predicate, that the subject will not always comes first, yes it can come at the beginning of the sentence and then the predicate will come. In some sentences what will happen, that the predicate will come and after predicate the subject can also come. In some sentence what will happen, it may left out, उससे बिना भी sentence हो सकता है, understand, not every sentence assertive sentence, I told you that उसके बारे में थोड़ा सा आगे classes हमने definitely discuss करेंगे। तो in that cases see you have इस तरह का बहुत सारा है, sit down, you sit down, understand, there is a many examples also you can consider to this which we are left out of the subject, understand। so हमको यहाँ पे तीन important point मिल गया है। तो जो आपको एज आई टोल्ड यू बार बार कहता हूँ कि एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम्पल्स याद रखने का, बिकॉज आपको खुद एग्जाम्पल बनाना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द ग्रामर। दुनिया में ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है कि दैट आपने इस ग्रामर इस सेंटेंसेस को समझ लिया और आपको ग्रामर सीख गया, इम्पॉसिबल है, अंडरस्टैंड। तो आपको लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। कब आएगा, व्हेन यू सिट फॉर योर ओन एग्जाम्पल्स, आपको खुद का जब एग्जाम्पल बैठोगे, ये तीन अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल लिखोगे, पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में सब्जेक्ट आने वाला और सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होने वाला, इस तरह का जो एग्जाम्पल्स आप खुद लिखेंगे, एक एक को लेकर कम से कम 10 एग्जाम्पल्स यू स्टार्टेड टू राइट, देन यू डेफिनेटली हैव अ सक्सेस इन योर ग्रामर पार्ट, इजंट इट। सो हमने तीन पार्ट देख लिया है। क्या क्या पार्ट देख लिया? सब्जेक्ट always comes first, okay, in some sentence it can be put after the predicate, very important note this is, okay। What is the third point? In some sentence it can be left out, right? ये तीन पॉइंट यदि आपने याद रख लिया तो आपको ग्रामर समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। दैट सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, सब्जेक्ट का डेफिनेशन आपको याद रह गया, इट कम्स इन सम सेंटेंस, इट कैन बी पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बाद भी आपको सब्जेक्ट आ सकता है, टेंशन नहीं लेना है। एंड इन सम सेंटेंस इट कैन बी पुट, इट कैन बी लेफ्ट आउट, उसको नहीं बिना भी मतलब सब्जेक्ट से बिना भी आप सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं इन असर्टिव सेंटेंस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है एंड आपने थोड़ा सा सोचेंगे तो याद डेफिनेटली आ ही जाएगा, अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लासेस है एंड वी विल बी डूइंग मोर एंड मोर क्लासेस, दिस विल बी कंटिन्यू फॉर श्योर। एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आपको जो भी डाउट है तो आप इमीडिएटली मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड आई इफ यू वांट आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि मेरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि दैट आप जितना मेहनत करते हैं घर में बैठ के, आप जितना खुद का ओन एग्जाम्पल्स लिखते हैं उसके ऊपर टोटल डिपेंड होता है कि दैट आप कितना आराम से आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू बार बार मेरा वीडियो में मैं हमेशा कहता हूँ कि दैट ऐसे नहीं है कि दैट आपको इसको बस ग्रामर सीखने से आपको इंग्लिश आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टैंड। दिस यू विल लर्न गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश, जो लिखना इंग्लिश जो आना चाहिए ये आपको अच्छा से आ जाएगा। बोलना इंग्लिश चाहिए तो आपको ज़रूरी है कि दैट यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम डे वन में। लगभग 3 महीने से आपको एक ही सेंटेंस कह रहा हूँ बिकॉज सच हमेशा एक ही होता है कि दैट यू कैन नॉट चेंज द ट्रूथ, राइट? सन इज ऑलवेज सन, यू कैन नॉट चेंज द सन इनटू समथिंग एल्स, राइट? सो सच ये है कि दैट आपको जैसे मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे हर रोज़ आपको कह रहा हूँ कि दैट
दिन भर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको थोड़ा सा इंग्लिश में ही सोचना चाहिए, इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मल भाषा सीखते हैं उसी तरह उसी को भी अपने नॉर्मल भाषा की तरह ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ मैं डोंट गिव सम आई वांट टू गिव टिप्स, वेरी सिंपल टिप्स है कि दैट हमने क्या कर समझ के बैठते हैं कि दैट मेमोरी नहीं रहता है कि सर हमने कोशिश करते हैं बोलने के लिए, कोशिश करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कोशिश करते हैं स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आई वांट टू गिव सम स्मॉल टिप्स दैट कि अपने कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो कोशिश ठीक तरीके से है क्या, दैट इज ऑल्सो वी नीड टू नो, वो भी जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। क्यों बेहद ज़रूरी है कि दैट हमने करते जाते हैं पता नहीं है किस प्रोसेस में करना चाहिए, मेहनत होते रहता है। हार्ड वर्क के साथ साथ जब आप स्मार्ट वर्क मिक्स कर देते हो तो देन यू विल बी सक्सेस। पहले था एक जमाना था ओनली हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस एंड अदर थिंग। इट इज ट्रू, हार्ड वर्क तो जरूरी है, हार्ड वर्क इन अ प्रॉपर वे। आई विल टेल यू अनदर एग्जांपल, हार्ड वर्क इज अ प्रॉपर वे, वो है सक्सेस का की हो सकता है। ओनली हार्ड वर्क करते करते जाएंगे तो आप सक्सेस नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंड, हार्ड वर्क के साथ आपने स्मार्ट वर्क को मिलाएंगे, स्मार्ट वर्क के साथ आपको स्किल्स का भी जरूरत है कि नॉट ओनली दिस इज 21st century, कम ऑन माय डियर, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी टाइम। इन दिस टाइम यू हैव टू गो विद द फ्लो के साथ आपको स्किल के साथ जाना है, ऐसे ही आपने कुछ हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट, मेनी पीपल विल गो फर्दर एंड यू विल बी बैक ऑफ इट, यू कांट अचीव जस्ट लाइक दैट। अंडरस्टैंड, अचीविंग द सेंस, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि दैट आपने इंग्लिश सीख लिया तो सब अचीव कर लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ चीजें है आपको सीखना जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दैट मैं आपको कॉन्फिडेंस देने का चाहता हूं कि दैट आपको इंग्लिश भी कैसे उसी कॉन्फिडेंस के साथ सीख सकते हैं। एंड देर आर सम सिंपल एग्जाम्पल्स एंड सिंपल एक्सरसाइजेस यू मस्ट डू माई डियर। इट्स कंपल्सरी। आपको लगेगा क्या सर एक्सरसाइज के साथ क्या इसके साथ कंटेक्ट है, इट इज ट्रू। व्हेन यू कीप योर माइंड काम, हर चीज आसान हो सकता है, हर चीज आसान हो सकता है। अंडरस्टैंड, आई वांटेड टू गिव यू स्मॉल एग्जांपल्स इन माय क्लासेस दैट एक बार ऐसे हुआ था, कर्ण ने उनके गुरु जो थे भगवान परशुराम के पास गए एंड ही वांटेड टू हैव बी ए स्टूडेंट ऑफ हिम एंड शिष्य बनना चाहते थे। कि भगवान परशुराम ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो लेकिन कर्ण ने नहीं छोड़ा। लेकिन लगातार उनके दोनों के बीच में डिस्कशन चलता है। भगवान परशुराम ने फेड ऑफ होकर उनको कहता है ठीक है, आई गिव यू सम टेस्ट यू, इफ यू पास आई विल थिंक, मैं सोचूंगा कि दैट तुमको शिष्य बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा बोल के। क्या था, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स बट दिस वन फॉर यू एक्चुअली, व्हाट इज दैट। तो ही टोल्ड करना दैट कि तुम जाना है एक बड़ा सा आम का पेड़ के पास, शाम तक मेरे को संध्या होने के पहले एक आम लेके आना है। तो ये तो बहुत आसान है, आम लेके आना, आम तोड़ के आना, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन देयर इज सम कंडीशन। क्या कंडीशन है, तुम पेड़ पे नहीं चढ़ोगे, आम को पत्थर नहीं मारोगे, नीचे गिरा हुआ आम भी नहीं लाना है, जो ऊपर से गिरेगा उसको हाथ में पकड़ के लेके आना है। ही सॉट दैट आउट, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ही विल गो मैंगो ट्री के पास जाता है, यू नो ही सर्च फॉर मेनी थिंग्स। तो वहाँ पे गिरता है, यहाँ पे गिरता है, नो मेनी थिंग्स विल हैपन सराउंडिंग हिम। कुछ भी नहीं कर पाता है कि दैट इन द लास्ट मोमेंट सनसेट होने वाला है, कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनट बाकी है, तो उस टाइम पर व्हाट ही विल डू, ओह मेरा लाइफ खत्म होने वाला है। तो ऐसे सोच के उन्होंने क्या डिसीजन करते हैं, ये विल सिट फॉर मेडिटेशन, चुपचाप बैठता है 5 मिनट के लिए। तो उनको सुनाई देता है कि दैट एक आम गिर रहा है। जब आम गिरने के पहले एक आवाज आता है टक, उस आवाज उनको सुनाई दिया। तो इसका मतलब उन्होंने हाथ रखता है तो उसी हाथ के ऊपर आम आके गिर जाता है। तो इट मीन्स भगवान परशुराम उनसे क्या टेस्ट कराना चाहता था, डज ही हैज अ पेशेंस और नॉट, उनके पास पेशेंस है या नहीं है। अंडरस्टैंड, सो उस पेशेंस आपको कैसे सीख सकते हैं कि दैट वी शुड हैव बीन काम। पहले बात यह है कि दैट हमको शांत रहना जरूरी है एंड नो फोकसिंग ऑन हाउ एंड व्हाट टू डू, उसके ऊपर हमको ध्यान 100% फोकस लगाना जरूरी है। एंड और भी बहुत सारा ग्रामर क्लासेस होगा, बहुत ही जल्दी होगा। वी आर प्लानिंग टू हैव रेगुलर क्लासेस along with it. And if you have any doubt in this, please don't forget to comment and please subscribe and share this many more people and friends of yours and सबको आप शेयर करना मत भूलिए। एंड ज़रूर देखते रहिए इस वीडियो को, बार बार देखने से आपको बहुत सारा चीज़ें मिलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा मोटिवेशन क्लासेस करने का भी, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मुरली सर classes and thank you very much.